after after this chapter, you'll actually understand moles. Okay, और हम साथ साथ questions करते रहेंगे moles के साथ साथ ताकि आपको understanding moles की develop होती रहे. Okay, so everyone must have calculators along with you, and we are starting off with a new chapter, and that is moles. Please stay very focused. Very interesting chapter क्योंकि ये chapter आप कह रहे हैं MCQs के लिए भी important, for structured questions very important, and then of course for ATP it's very important. Because there is no paper which is actually without mole concept and stoichiometry. Okay, so stay very focused, and we start off with the moles chapter. एक तो आपने calculators भी अपने पास रखें, and be very attentive. Okay, and super responsive. So there we go. Let me add people. और मैंने आपको एक वर्कशीट भी दी थी, if you remember. I hope आपने वो भी कर लिया होगा. Right. उसको भी डिस्कस कर लेंगे. Okay. Okay, so basically organic chemistry was meant to happen over this weekend. I had to, लेकिन इस weekend जो कि मैं busy रहा हूँ तो मैं organic class ले नहीं सका, इसलिए मैं आज और कल लूंगा organic class from 8 to 9 online. ठीक है, और फिर आगे हम रखेंगे weekend पे, and we'll make it of course a mixture of physical and the online classes. And please make a separate notebook for organic क्योंकि organic is very important. और बड़ी interesting है और बड़ी मजे की है. I hope you like organic. सर अच्छी बात है क्योंकि मेरा परसों केमिस्ट्री का पेपर है और मुझे ऑर्गेनिक के अंदर मेरा मैक्रोमोलेक्यूलर में मसला हो रहा है बहुत ज्यादा. Oh, may Allah करे इंशाल्लाह. Recording से last minute changes parts left. नहीं वो असल में वो मैंने ऐसे ही बोला था. उस रिकॉर्डिंग में वो लिखा था last energy part is left. वो असल में it was not for actually O level 9 GCSE. वो AQA का पार्ट जो कि रहता है. If anyone is from AQA. Okay. नहीं मजा आएगा ऑर्गेनिक में. Don't worry. I hope you all will like organic. After mole concept and stoichiometry, we will be doing acids, bases, and salts. Okay. So guys, there we go. Please stay focused. Very important, very interesting. I am rotating my screen. So I hope you all can see my whiteboard. Now, it is mole concept and stoichiometry. इंतहाई important chapters शुरू हो गए हैं. Moles, organic, right? Please make sure that you stay very attentive. So the bond energy value given in the paper. Yes, Omar, we give the bond energy value in the paper. Like I gave you in the questions. Okay, so there we go. Hello guys, everyone. I hope you're doing well. Let's start off with the new chapter, the mole concept and stoichiometry. अच्छा, many students say me that कि sir ये chapter मुश्किल है, ये chapter समझ नहीं आता. So guys, let's make this chapter a very easy chapter and very interactive and interesting chapter. I hope that by the end of this chapter, you will actually come to know what is mole concept in stoichiometry and how to solve the calculations. I'm telling you, it's the most scoring one. And once you have a grip on this, your ATP, your structured questions, your paper 1, and then eventually your A level will go really smooth. ठीक है, तो concept start करें.
There we go. Listen to my words very carefully. If you are focused, I'm telling you, this chapter will be on your tips, inshallah. और मैंने throughout इसके questions करवाते रहने हैं. So let's start off with the story. By the way, this is a mole wearing a lab coat saying, I love chemistry. Indeed. Okay. Now guys, everyone. देखिए यार, फिजिक्स में और मैथ में हमारे पास वेरियस क्वांटिटीज हैं. जिस तरह मैथ एक क्वांटिटी है जिसका यूनिट इज एक्चुअली केजी और कैन से ग्राम्स. सो बेसिकली इन फिजिक्स एंड मैथ जो क्वांटिटीज हम नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं, चले मास भी क्वांटिटी है, चले वॉल्यूम भी क्वांटिटी है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मास के यूनिट्स क्या हैं? I mean, it can be, let's say, it can be kilogram, I mean, it can be gram. जिसके अंदर I can say कि ये जो kg है, it's actually a bigger quantity. I mean, it's a bigger unit, sorry, you can say. ठीक है? Sorry. It's a bigger unit. And I can say gram is a smaller unit. Similarly, volume कर लेते चले, we have meter cubed, we have actually decimeter cubed, and then we have centimeter cubed. I can say that meter cubed is the biggest quantity unit, and I can say cm cubed is the smallest unit. Say thanks to Greeks जिन्होंने ये larger or smaller units बनाए. And we also know that like 1 kg is equals to 1000 grams. So हमें पता है कि बिगर क्वांटिटी जो है उसके अंदर स्मॉलर क्वांटिटीज कितनी होंगी. लेट्स से आई नो दैट कि इफ इट्स 1 मीटर क्यूब्ड इज इक्वल्स टू 1000 डीएम क्यूब्ड, एंड आई नो दैट इट्स इक्वल्स टू 1 मिलियन सीएम क्यूब्ड. आज अगर मैं कहता हूं कि जी मेरे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास आई हैव अ पैक ऑफ राइस, राइट? तो rather I say that कि मेरे पास 5000 grams राइस के हैं, I say that I have 5 kg राइस, isn't it? क्या ये आसान नहीं है कहना? Is that so? Very simple. चलिए और सिंपल कर लेते हैं. Let's say मैं निकला घर से बाहर and I had to go to school, and let's say I reached my school, right? And I said to my friend, so today I drove 60,000 meters in 3600 seconds. Can you please मेरा फ्रेंड भी हो जाएगा जी परेशान. बच्चा. can you please scroll up? Yeah, I will. लिख ले. So basically, in physics and maths, we have large quantities and small quantities, isn't it? Large units, small units. The mass एक quantity है, उसके यूनिट ग्राम भी है और फिर किलोग्राम भी है और फिर आगे टन भी है. एक टन में 1000 kg होता है और फिर 1 kg में 1000 ग्राम होता है. So we have small units and large units, small quantities and large quantities. Similarly, volume, as I told you, centimeter cubed है, dm cubed है, meter cubed है. Even time, seconds है, फिर minutes है, फिर hours है, फिर week है, फिर month है, फिर year है. लेकिन every time we know that how much smaller quantity is actually present in a large quantity. Let's say, for example, as I showed you in the screen, if you have a pack of rice, यहाँ तो आप 5 उसको यहाँ 5 kg कह लें या 5000 grams कह लें, आपकी मर्जी है. लेकिन ज्यादा आसान क्या कहना, it's 5 kg. Is that so? So ये तो बात होगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की. इसलिए मैं भी आपसे एग्जांपल डिस्कस कर रहा था. लेट्स से इफ आई ड्रोव अ कार एट 60 किलोमीटर्स पर आवर, अब मैं उसको 60 किलोमीटर्स पर आवर कहूं या 60,000 मीटर्स इन 3600 सेकंड्स को, बात एक ही है. लेकिन it's much better to say something in the large quantity. Why? Because at least you can instantly define it and realize it. So shall I move on? Yes, sir. Okay, there we go. Is that so? Very simple.
चलिए और सिंपल कर लेते हैं. लेट्स से मैं निकला घर से बाहर and I had to go to school, and let's say I reached my school, right, and I said to my friend, so today I drove 60,000 meters in 3600 seconds. मेरा फ्रेंड भी बोलेगा परेशान, पता नहीं किस स्पीड पे गाड़ी चलाया. तो आई थिंक उसका बेटर वर्जन इज कि I drove at 60 kilometers per hour. Rather, I say I drove at 60,000 meters per 3600 seconds. तो लार्जर क्वांटिटी बनाने के पीछे रूल क्या था? ताकि हम एक इतनी बड़ी फिगर्स को कम से कम स्मॉलर फिगर्स में हम उसे कन्वर्ट कर सकें. लिखना भी आसान हो, कहना भी आसान हो, अंडरस्टैंड करना भी आसान हो. इज दैट सो? So guys, जिस तरह physics and math have quantities, इस तरह chemistry में the famous measurement of the quantity is mole. Mole is also a quantity. मैं animal की बात नहीं कर रहा. Mole भी quantity है. It's a quantity. जिसकी unit जिस तरह कहते हैं MOL. mass is a quantity. Is the mole is also a quantity in chemistry. Is the mass ka unit is grams or kilograms. Mole ka unit is MOL. Is a unit, and it's actually a bigger quantity. It's a bigger unit. So basically, जिस तरह हम कहते हैं कि 1 kg में 1000 grams होते हैं, इस तरह 1 mole क्या है फिर? तो I must tell you that 1 mole is equal to 6.02 into 10 raised to power 23 particles. अगर इतने पार्टिकल्स हमारी केमिस्ट्री में किसी भी चीज की हो, और ये पार्टिकल को मैं एटम्स भी कह सकता हूं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं. राइट? So basically एक पार्टिकल तो आपको दिखता नहीं ना, आपको एक एटम थोड़ी दिखता है, या एक आयन थोड़ी दिखता है, या एक मॉलिक्यूल थोड़ी दिखता है. हाँ, अगर 6.02 10⁻23 अगर पार्टिकल्स इकट्ठे हुए हो तो आप उसको एक मोल कह सकते हैं. यहां तो मैं कह दूं कि मेरे पास 6.02 10⁻23 एटम्स हैं, तो इट्स बेटर इफ यू से 1 मोल ऑफ एटम्स. राइट? अगर मैं कहूं मेरे पास 3.01 इन 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप उसको हाफ मोल कहते हैं. ओके, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री में पार्टिकल्स हैं, या वो एटम्स हैं, लेट्स से, या वो मॉलिक्यूल्स हैं, या वो आयंस हैं. सो दिस फिगर विद 6.02 10⁻23, अगर इतने पार्टिकल्स इकट्ठे हुए हो तो आप उसको एक मोल कहते हैं. तो एटलीस्ट एक मोल तो आपको दिखेगा ही ना, सारी सी बात है. सर ये एटॉमिक मास यूनिट और मोल का कोई रिलेशन है? मैं अभी इसका अगर आंसर करूंगा तो शायद आपको समझ ना आए. अभी वेट करते हैं नंबर ऑफ पहले जो पार्टिकल्स कहने का, फिर बताऊंगा एटॉमिक मास यूनिट का मोल से क्या रिलेशन है. ओके सर. एज सच कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो एक पार्टिकल का मास है और वो जो ग्राम है वो एक मोल का मास है. लेकिन अभी नहीं, अभी जो ना I'll come on that point soon. So basically 6.02 10⁻23 जो पार्टिकल्स हैं, राइट, अगर इतने पार्टिकल्स इकट्ठे हुए हो तो हम उसको एक मोल कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर. ओके, so there we go. So basically अगर मेरे पास इतने एटम्स हो, मैं कहूंगा मेरे पास एक मोल एटम्स है. अगर मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स हो, मैं कहूंगा मेरे पास एक मोल मॉलिक्यूल्स हैं. अगर मेरे पास इतने आयंस हो, मैं कहूंगा मेरे पास एक मोल आयन है. Rather saying that कि मेरे पास 6.02 10⁻23 एटम्स हैं, लगेगा पता नहीं कितने एटम्स हैं, तो I'll say मेरे पास 1 मोल है. तो 1 मोल कहना और लिखना, I think it's more easily expressible, isn't it? So I hope now that you are clear that अगर पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएं, इतने पार्टिकल्स 6.02 10⁻23, तो we say that it's 1 mole of that atoms. ठीक है? Let's say कि मेरे पास मोबाइल्स हो
और मैं कहता हूँ जी मेरे पास 6.02 10 is to power 23 मोबाइल्स इकट्ठे हो जाए तो I can say I have 1 mole of mobile, isn't it? Just an imaginative screen. A quick quiz for you. So it's a mole actually. It's a mole, right? And how many atoms are there in a mole? And this said 6.02 10 is to power 23. You've earned a sticker. So if you go to a vegetable shop, right? If I say you have 1 mole of tomatoes, and bother them please. Take 1 mole of cabbage, 1 mole of blueberries, bananas, potatoes, and the clementines. So 1 mole का मतलब क्या है? 1 mole banana means इतने bananas. 1 mole blueberries means itni blueberries, right? So I hope that now you've got the concept कि 1 mole में इतने particles होते हैं, इतनी species होती हैं, right? और सबसे funny, like I'll show you a picture. See. So, this 6.02 10 to the power 23 is 602,000 billion. Let's say if this car is worth it, so I can say this car is 1 mole. See, the mole is sitting. So it's a 1 mole. So 1 mole is 602,000 billion, right? Just interesting. So now we know that 1 mole is equals to 6.02 10 is to the power 23 particles. So guys, everyone, when I say that 1 mole is equals to 6.02 10 is to the power 23 particles, this value was actually found by a physicist, a scientist whose name was Avogadro's. That's why this figure is also called as Avogadro's constant. Who was Avogadro's, by the way? I can show you. So guys, here's the buddy who gave the concept of Avogadro, right? और जितने आगे गैस लॉज हैं, अगर हम गैस लॉज पढ़ते हैं ए लेवल में जाके, ठीक है, वहाँ भी एवोगाड्रोस लॉ भी आता है, वो भी इसी ने ड्राइव किया था. एंड ही टोल्ड दैट कि देयर आर 6.02 10 is to the power 23 particles, and we can say that 1 mole. So Avogadro constant is a very important number in physics and chemistry, and you will see it pops up frequently. So memorize the number, guys. This is 6.02 10 raised to power 23. Okay. Now, once we know that what is Avogadro's constant, that 1 mole is equals to इतने particles, तो मुझे बताएं फिर, अगर 1 mole में इतने particles हैं, मेरे पास अगर 4 moles हो, फिर कितने particles होंगे, right? If 1 mole is equals to Avogadro's number, then what if I have 4 moles? तो 4 mole में कितने होंगे? तो it's 4 into Avogadro's, isn't it? Isn't it? So यहाँ से एक फॉर्मूला बाहर आ जाता है. फिर तो फॉर्मूला क्या होता है? That number of particles is equals to number of moles into Avogadro's constant. Normally हम number of moles को small n से represent करते हैं in chemistry. So if you know the number of moles multiplied by the Avogadro's constant, you'll find number of particles. Or if you know number of particles, so divide by with the Avogadro's constant and you'll find number of moles. So you have got the first formula, guys. Okay? Enjoying? Now let's say, for example, let's say I have a question that how many atoms are there in 2 mole helium in a gas jar? So I'll do the first question for you. कितने atoms होंगे helium के in 2 mole of helium in a gas jar? So guys, so we say that the number of helium atoms is equals to moles into Avogadro's constant. So I think it's 1.2 10 is to power 24 atoms. Okay, so now it's your turn.
how many molecules are there in 4 mole oxygen gas in a gas jar? This. Then third, So can you please rewind a bit? how many moles of ions? Just a moment. Sir, also आपने जो ऊपर लिखा था that number of particles is equal to number of moles into Avogadro's constant. तो number of moles के नीचे आपने brackets में क्या लिखा है? It's small n. हम नॉर्मली केमिस्ट्री जब नंबर ऑफ मोल तो हम उसके लिए स्मॉल n लिखते हैं. जैसे मास के लिए कभी कभी हम n लिखते हैं ना, m, और टाइम के लिए t लिखते हैं. इस तरह मोल्स के लिए हम n लिखते हैं. Yes sir, thank you. Okay. Okay, shall I move on? कि आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. Okay, sir. Okay. There you go, guys. So you have to be quick, please. Quick. The speed याद रखिएगा. ये पार्ट 3 जरा चेंज कर लें. हाउ मेनी आयंस रिप्रेजेंट 2.5 मोल सोडियम आयंस. ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयंस नहीं, हाउ मेनी आयंस. ये मोल्स ऑफ काट दे प्लीज. पार्ट 3 में हाउ मेनी आयंस रिप्रेजेंट 2.5 मोल. मोल्स ऑफ आयंस काट दे वर्ड. Okay, so guys, so we can start off. It's easy. Number of molecules निकालने हैं आपने. So it's equals to 4 into Avogadro's constant. I think 2.4 हो जाएगा. कर देते हैं. 6.02 10 is to power 23 into 4. Okay, it's 2.41 10 is to power 24 molecules. How many moles of ions represent 2.5 moles sodium ions? ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ. अब आपको मोल्स दिए हुए हैं. सॉरी, आपको सॉरी, आई जस्ट wrote wrong. How many ions? How many moles of ions are present? Oh my god, I wanted to give you a different question. I wrote something wrong. Please cut it off. Sorry, I saw it late. This question should have been like this. How many moles of ions represent 2.5 10 is to power 25 sodium ions in a solution? ये क्वेश्चन करें प्लीज. मैं उसको रिफ्रेश कर दिया क्वेश्चन को. Okay, sir. लेट्स डू इट लाइक दिस. Sir, 41 moles. Okay, there we go. 41.5 28 2392. आंसर देना आपने 3SF में, हमेशा याद रखना है. Okay, sir. सॉरी, मैं वो आगे ये 10 is पर 25 ना भूल गया था. प्लीज इग्नोर एंड डू दिस वन प्लीज. ठीक है, ओके हो गया, डन.
जी सर 41. So हमें पता है फॉर्मूला ये है, number of particles is equals to moles into Avogadros. That's the formula. ठीक है, तो वो कहता है how many moles of ions are present. moles निकालने हैं, particles कितने हैं 2.5 10 is to power 25 और ये आ गया Avogadro's constant. So moles will be equal to 2.5 10 is to power 25 divided by Avogadro's. So it is 2.5 10 is to power 25 divided by, so it is 41.5 moles. Okay, so guys, I hope that you are clear now with one aspect, and और मैं move करूँगा step by step, ठीक है, ताकि आपके ब्रेन में वो बात completely stick हो जाए, right, about moles, so that at the end जब मैं सब कुछ amalgamate करूँ, right, तो you are just amazing in moles. Okay everyone, so guys, so we now know that we have learned the first formula of moles, and that is this. जिस तरह I must tell you कि जिस तरह for example physics में mass निकालने के बहुत सारे formulas हैं, weight is equals to mg, potential energy is equals to mgh, kinetic energy is equals to half mv squared. तो I think यहाँ पे सब में mass आ रहा है, तो you can find out mass. लेकिन क्या हर दफा mass निकालने के लिए एक ही formula होता है? No, it depends on the situation. Similarly guys, I must tell you that moles also have various formulae. And every time there is a situation where you have to use a certain formula to calculate the moles. Like in this case, you can see that कि moles निकालने का एक ये तरीका भी है. अगर मुझे number of particles पता हो, क्योंकि ये तो मुझे पता है, अगर number of particles पता हो तो मैं moles निकाल सकता हूँ, और math के through चले अगर ये पता हो for a while तो आप ये भी निकाल सकते हैं. So I just want to educate you that there are various formulae to find out moles of a substance. I hope you're clear. So guys, this was the first part. I want to tell you that one mole का मतलब क्या होता है. So 1 mole means it contains Avogadro's number of particles, and that is 6.02 10 to the power 23. Ji guys, are you clear? So basically the first part is that you should know that 1 mole contains how many number of particles, and that is Avogadro's constant 6.02 10 to the power 23. Okay, moving on now. Ji bacha. So why did Avogadro choose this number? He could have chosen another number as well. What is the reason behind it? नहीं, ये नंबर को चूज नहीं किया गया, ये नंबर की कैलकुलेशन है बेकायदा. Okay, like I'm curious, like how did find it? Okay, so basically ये कैलकुलेशन हमने की थी electrolysis से, right? We did electroplating, and using electrolysis and the equations and the Faraday's constant, we found out the Avogadro's constant. लेकिन अभी शायद ना समझ आए maybe, लेकिन जब आप A level में आएंगे, बल्कि A2 में आएंगे, not in A1 as well. In A2 when you come up, so we do tell you how to find out the Avogadro's constant, but not in O level or A1 maybe. तो A2 में आके आप इसको पढ़ेंगे जरूर कि how to calculate Avogadro's constant. Okay, so it's actually a calculation. Okay, sir. Just give me a moment. Wait a second, please. Okay. There you go. Let me enter people. Disconnected. Okay, ready? Yes, Ali, mole era starts today.
It's a nice statement. There we go, guys. So small concept in trigonometry. Let's move on. Hello everyone, I hope you're doing well. So in the last lecture we started learning about moles, and now we know the first formula of moles. That is, if you have, now you know that 1 mole contains Avogadro's number of particles, 6.02 10 raised to the power 23 particles, and these particles can be atoms, molecules or ions. It actually depends with reference to the context. So from this relationship we derived a formula, and the formula was that number of particles is equal to number of moles into Avogadro's constant. क्योंकि रेशियो बनेगी ना, अगर एक मोल में लेट्स से, ठीक है, अगर एक मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास 5 मोल्स होंगे तो कितने पार्टिकल्स होंगे, तो रेशियो अप्लाई हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि दिस, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला वी हैव फाउंड आउट टू कैलकुलेट मोल्स. Now let's move on from here. I should tell you that, okay, like I told you in the last time in the lecture as well, कि देखें जिस तरह फिजिक्स में मास निकालने के लिए वेरियस फॉर्मूले हैं, वेर इज इक्वल्स टू mg, हाफ mv स्क्वायर्ड, mgh, f इक्वल्स टू ma, राइट. लेकिन क्या हर फॉर्मूला हर दफा यूज होता है? क्या हर दफा यूनिट्स जो हैं वो उस तरह ही रहते हैं? नो. सो बेसिकली जिस तरह सिचुएशन वाइज है, जब अगर आपको फोर्स और एक्सेलरेशन दी हुई तो आप मास निकाल रहे हैं f इक्वल्स टू ma से. अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है लेट्स से, तो आप मास निकाल रहे हैं हाफ mv स्क्वायर्ड से, प्रोवाइडेड आपको यू आर गिवन विद द काइनेटिक एनर्जी. So it means that every time it is situational. Now in this case, again, since moles is a quantity, right? यानी कि mole is a quantity, so इसको भी find करने के various ways हैं, right? And the various ways are, so see, observe please. So guys, so the various ways where moles can be calculated, it depends, on the situations. Like for example, पहले इस वाले देखें triangle पे, the first triangle. देखिए mass, moles, relative molecular mass, or you can say molecular mass, or you can say atomic mass. It depends कि अगर आप element use करें तो फिर आप atomic mass use करेंगे, अगर आप compound या molecule use करें तो आप molecular mass use करेंगे. अभी मैं इस बात पे डिफर करूंगा when I go in very details. तो mass, moles and relative molecular mass have one relation, right? जहां हम कहते हैं the formula is number of moles is equals to mass or molecular mass. Are you seeing that? कि अगर आपको mass पता हो और अगर आपको molecular mass पता हो उस compound का, या उस element का आपको atomic mass पता हो, तो आप उसके number of moles निकाल सकते हैं. So moles निकालने का ये formula. Then let's say अगर मैं इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व करूं, देखिए वॉल्यूम, मोल्स, एंड दिस इज मोलर गैस वॉल्यूम. दिस 24,000 in chemistry is called as molar gas volume. जब आगे आएंगे डिटेल पढ़ेंगे तो I'll tell you. It says that 1 mole of any gas. ये वजह? So could we rewind a little? Okay. So guys, so the various ways where moles can be calculated, it depends, on the situations. Like for example, पहले इस वाले देखें triangle पे, the first triangle. देखिए mass, moles, relative molecular mass, or you can say molecular mass, or you can say atomic mass. It depends कि अगर आप element use करें तो फिर आप atomic mass use करेंगे, अगर आप compound या molecule use करें तो आप molecular mass use करेंगे. अभी मैं इस बात पे डिफर करूंगा when I go in very details. तो mass, moles and relative molecular mass have one relation, right? जहां से हम कहते हैं the formula is number of moles is equals to mass or molecular mass. Are you seeing that? कि अगर आपको mass पता हो और अगर आपको molecular mass पता हो उस compound का, या उस element का आपको atomic mass पता हो, तो आप उसके number of moles निकाल सकते हैं. So moles निकालने का ये formula. Then let's say
अगर मैं इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व करूं, देखें वॉल्यूम मोल्स एंड दिस इज मोलर गैस वॉल्यूम. This 24,000 in chemistry is called as molar gas volume. जब आगे आएंगे डिटेल पढ़ेंगे तो I'll tell you. It says that कि 1 mole of any gas occupies 24,000 cm cube volume at room temperature and pressure RTP. So अब बस अभी इस मोमेंट पे इस चीज पे गौर करें कि वॉल्यूम मोल्स एंड दिस मोलर गैस वॉल्यूम दे आल्सो हैव अ रिलेशनशिप, राइट? एंड दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर गैस वॉल्यूम, राइट? नाउ दैट इज वन मोर फॉर्मूला. बट रिमेंबर, ये वाला फॉर्मूला जो है बेसिकली इट्स ओनली फॉर गैसेस एट RTP. ठीक है? डोंट अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन लिक्विड्स. सो दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर गैसेस. दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर गैसेस. Then there is one more formula where the concentration and volume of solution and moles are there. By the way, this is actually volume of solution or liquid. Now, how these three quantities are linked? So guys, it is number of moles is equals to, your concentration into volume. So this is one more formula to calculate moles. So basically, मैंने आपको 3 formulas बताए of moles. I was telling you constantly that in physics, to find a certain quantity, let's say mass, you have various formulae. It's like in chemistry, to calculate moles, we have various formulae. लेकिन it depends कि आपको other quantities of situation क्या available है. So one is moles equals to mass or molecular mass. The other is volume equals to mole into molar gas volume. And the third one is concentration is equals to moles or volume. या फिर moles equals to concentration into volume. So basically, ये formulas हम throughout chemistry use करने वाले हैं, right? बस सिर्फ फर्क इतना होगा, हम देखेंगे कि उस सवाल में information क्या available है. तो जिस तरह की information available है, उस तरह का formula लगेगा और हम calculation कर लेंगे. It is that easy. Yes, this is the concentration of a substance in solution. मोलर गैस वॉल्यूम मैंने अभी आगे वैसे पढ़ाना है, लेकिन सिंस यू हैव आस्क्ड मी तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं. मोलर गैस वॉल्यूम क्या होता है? मोलर गैस वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस. यानी कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस हो, 1 मोल नाइट्रोजन गैस हो, 1 मोल मीथेन हो, एनी गैस, हीलियम हो, नाइट्रोजन हो, व्हाटएवर, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज, ये मैंने वैल्यू लिखी हुई है, 24,000 cm cube at RTP. तो रूम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज दिस मच वॉल्यूम. तो अगर 1 मोल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो अगर मेरे पास 5 मोल्स हो तो वो कितना ऑक्यूपाई करेगा? 5 into 24,000. So this makes the formula volume of gas equals to moles into molar gas volume. जो सबसे लेफ्ट बॉटम पे लिखा हुआ है बेसिकली कि जहां पे जो मोल्स इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, राइट? दिस इज फॉर सॉल्यूशंस. ठीक है, लेकिन हम ये फॉर्मूला कभी कभी गैस पे अप्लाई हो जाता है. मोल्स इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम में गैस पे अप्लाई हो जाता है फॉर्मूला, लेकिन ओ लेवल में नहीं होता, ए लेवल में होता है ये फॉर्मूला अप्लाई ऑन गैसेस. इन ओ लेवल एंड IGCSE we normally apply this concentration formula only for solutions. Okay. और ये moles equals to mass over जो molecular mass है, it can be for solids, it can be for liquids, it can be for gases. Moles equals to mass over molecular mass. This formula, it can be for solids, liquids, and gases. Volume of gas is equals to moles into molar gas volume. It's only for gases. Of a concentration is equals to moles over volume. It's only for liquids and solutions. Though it is also applicable in gases, but not in your level. At higher level, we do apply it on gases too.
We can use 24 dm cube as well. आप चाहे 24,000 cm cube लिख दें या 24 dm cube लिख दें, एक ही बात. Okay, shall I go on, everyone? So this formula is used for solutions. So this formula is used for solutions. नीचे मैंने एक नोट भी लिखा हुआ है. As you can see, the mole is a unit frequently used by the chemists as it measures the amount of substance. क्योंकि mole is a quantity. Calculations involving moles are very common in chemistry. And these are the equations. Indicate this is the first equation, second equation, third equation, used for working out number of moles within solutions, gases, and the mass of a substance. But you may need to use more than one equations. Be careful of the units. So as we start off with the calculations, तो आपको idea हो जाएगा कि कभी-कभी हमें एक सवाल में ये सब चीजें भी यूज करनी पड़ जाती हैं, लेकिन it all depends on the situation. So I hope that now you are clear that moles निकालने के various तरीके हैं. एक हम फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं और अब हमारे 3 formulas आए हैं. हम इनको लेकिन separately पढ़ेंगे, and once we're done with the formula, then we'll amalgamate the concept. ठीक है? So guys, let's start off with the first formula. ये जो आपने 24,000 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, Yes. ये 24 डीएम क्यूब में लिख सकते हैं, लाइक? हाँ, yes, absolutely. आप चाहे इसको 24 dm क्यूब लिख दें. Oh, thank you. Learning, and that is this one. Okay, are you ready? So guys, we are learning this formula. Number of moles is equals to mass over molecular mass. रट्टा नहीं मारना, लेकिन मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट दिस फॉर्मूला मींस. ठीक है, तो गेट रेडी. पहले मोलेकुलर मास क्या होता है? व्हाट इज एक्चुअली मोलेकुलर? आप जरा बातें बड़ी ध्यान सुनिएगा प्लीज. ठीक है, तो प्लीज स्टे वेरी फोकस्ड नाउ. इन सिंपल टर्म्स, इट इज द सम ऑफ atomic masses of all elements in a compound. Let's say for example NaCl. अब सोडियम का जो एटॉमिक मास है, ठीक है, it is 23 and Cl is 35.5. So I can say it is 23 plus 35.5. You can say it is 58.5. Simple. Let's say if it was copper 1 oxide, तो इसका molecular mass क्या होगा? तो copper is 64, oxygen is 16. तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे basically, you'll say that. So it is 64 into 2 plus 16. So you can say 64 into 2 plus 16. So it is 144. Let's say for example it is CH4. ठीक है, so carbon is 12 and hydrogen is 1. ठीक है, तो I can say it is 12 plus 1 into 4. So I can say 16. Now the interesting fact is that these two are ionic compounds and this is a covalent compound. आप लोगों को basically atomic mass दिया होगा ना periodic table में. You would given the periodic table, and in the periodic table the atomic mass is given. So if you know the atomic masses, you can find the molecular mass, of course. खाली बस ये टर्म बोलने में मसला है, अदरवाइज मीनिंग सेम है. जो मोलेक्युलर जो के बेसिक कोवलेंट कंपाउंड है, यानी कि इट्स अ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, तो इसके टोटल मास को हम कहेंगे मोलेक्युलर मास या रिलेटिव मोलेक्युलर मास और relative molecular mass.
लेकिन जो आयोनिक कॉम्पाउंड्स हैं इनके तो क्रिस्टल्स होते हैं, इनके तो मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ये तो क्रिस्टल्स होते हैं। तो इसलिए बेसिकली इनको हम मोलेकुलर मास का वर्ड नहीं यूज करते, रादर वी कैन से कि दिस इज द फॉर्मूला मास ऑफ कॉम्पाउंड्स और relative formula mass। हालांकि निकालने का तरीका एक ही है, लेकिन सिर्फ हमारी टर्म्स में फर्क है। ओके, आई एम राइटिंग a compound, please calculate its relative formula mass। तो बेसिकली आई होप नाउ यू नो दैट कि अगर तो मॉलिक्यूल असल में आप चाहे आयोनिक कंपाउंड के वो कोवलेंट कंपाउंड के यानी मोलेकुलर मास निकालने का तरीका एक ही है, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस, बस खाली जो टर्म यूज डिफरेंट की जाती है। अगर पेपर में टर्म यूज हो ना रिलेटिव फार्मूला मास, इसका मतलब है कि एग्जामिनर यूजुअली बात कर रहा है ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। फार्मूला मास असल में आप कोवलेंट कंपाउंड का भी हो सकता है, असल में CH4 जो 16 है आप उसको भी फार्मूला मास कह सकते हैं, क्योंकि इट्स फार्मूला मास यानी कि फार्मूला का मास। लेकिन मोलेकुलर मास वर्ड यूज करना आयोनिक कंपाउंड के लिए ये इट इज इनअप्रोप्रिएट। तो यू विल सी इन द पेपर्स, राइट, आप जो केमिस्ट्री के पेपर्स में या बुक्स में देखेंगे, जब कभी आयोनिक कंपाउंड लिखा होगा ना तो उसका लिखा होगा रिलेटिव फार्मूला मास या फार्मूला मास लिखा होगा। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड है उसको मोलेकुलर मास कहते हैं, फार्मूला मास कहते हैं, नो इश्यूज। लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड होता है उसको हम फार्मूला मास कहते हैं। वी डोंट यूज एक्चुअली मोलेकुलर मास वर्ड फॉर इट, इट इजंट राइट टू यूज दैट वर्ड। Moving on now. Compound, please calculate its relative formula mass। So I think फिर मैं ionic compound दे रहा हूँ आपको। So it is at copper sulfate, alumina hydrate। Copper is 64, sulfur is 32, oxygen is 16, hydrogen is 1, aluminium is 27 और क्या है? Nothing. Please start off. So calculate relative formula mass of this compound। ये बीच में dots हैं। Chill, please be quick. It is copper sulfate, alumina hydrate, जिसका formula is CuSO4.Al2O3.24H2O। Okay. Quickly, please. I've given you the atomic masses. Calculate relative formula mass of it. Okay, great, Malaika. Great. अयान इसके दोबारा करो कैलकुलेशन। नो जो डॉट मींस एडिशन, क्योंकि सारे मैथ्स आप ऐड करेंगे ना। Great. Answer 694. Yep. Absolutely brilliant. Into 16. So G done. So 64 plus 32 plus 16, sorry, into 4 plus 27 into 2 plus 16 into 3 plus 24 into 16 plus 2, 18. So let's find it out. My calculator, 64 plus 32 plus 16 into 4 plus 27 into 2 plus 16 into 3 plus 24 into 18. So guys, that is 694. So that's how you calculate relative formula mass for an ionic compound or relative molecular mass for a covalent compound or a simple molecule. जिस तरह अगर मैं कहता हूँ कि ये Cl2 है, इसका मुझे molecular mass निकालना है, इसका तो molecular mass होगा ना, ठीक है, कि ये molecule है, क्योंकि it's a molecule, element है, right? So you'll say that it is 35.5 plus 35.5, so I can say that 71 is a relative molecular mass of Cl2. Okay? Now, listen to my words very carefully. Lend all your ears to me. जी सर, मैंने कर दिया।
Thank you, sir. No problem. Seven into 2 plus 16 into 3 plus 24 into 18. So guys, that is 694. So that's how you calculate relative formula mass for an ionic compound or relative molecular mass for a covalent compound or a simple molecule. जिस तरह अगर मैं कहता हूँ कि ये Cl2 है, इसका मुझे molecular mass निकालना है, इसका तो molecular mass होगा ना, ठीक है, क्योंकि ये molecule है, क्योंकि it's a molecule, element है, right? So you'll say that it is 35.5 plus 35.5, so I can say that 71 is a relative molecular mass of Cl2. Okay? Now, listen to my words very carefully. Lend all your ears to me. Guys, एक तो definition हो गई molecular mass की, ये वाली, जो हमने यहाँ लिखी थी. ठीक? Agreed. So, ठीक है, agreed. Now listen please carefully, please, ठीक है, very carefully. Suppose करें कि मेरे पास एक बीकर है और बीकर मेरे पास वाटर पड़ा है, तो इसका मास निकल आया 18 ग्राम.